So limiting reagent is a very important concept of moles or limiting reagent. If we are able, if we are able to identify the limiting reagent, if we are able to identify the limiting reagent, we can easily calculate the whatever you need to calculate about the product. That can be the moles of product, that can be the mass or volume or whatever the quantity they're demanding. Now the limiting reagent concept is actually applied to a scenario, to a situation where both the reactants quantities are given to you, both the reactant quantities are given to you, right? Now, for example, I have two reactants and I have reactant A and reactant B, right? And they are producing the substance C. C is my product. And they have given me the quantities of A as well as B. Now, there can be the chances that any one of them can be in excess and any one of them can be your limiting reagent, right? So why we need to find out which is an excess and which is a limiting reagent? The reason is कि आपका जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो हमें कैंसिल आउट, हमें इग्नोर करना होता है आफ्टर फाइंडिंग आउट कि एक्सेस में कौन है और लिमिटिंग रिएजेंट के जो मोल्स हैं या लिमिटिंग रिएजेंट की जो वैल्यूज हैं उससे हम प्रोसीड करते हैं अपना कैलकुलेशन और वी फाइंड आउट अबाउट वॉट एवर दे आर डिमांडिंग अबाउट द प्रोडक्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा अब ये इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि हम लिमिटिंग रिएजेंट क्यों अप्लाई करते हैं और मेरे ख्याल से इसको ये सुनकर आपको यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ बर्गर, ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ बर्गर एंड फॉर द बर्गर द you're trying to make a burger और आपके burger की preparation के लिए you require two things. You require buns and you require the burger patties. ठीक है, you require burger patties. Now, for example, I have 10 buns, but I have 8 burger patties. So what is limiting my formation or the making of a burger is my burger patties. So I'll be able to make just 8 burgers. And this is basically my excess. तो मेरे पास जो एक्सेस है वो कंट्रोल नहीं कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को, लेकिन मेरा लिमिटिंग रिएजेंट मेरे प्रोडक्ट को जो है वो कंट्रोल कर रहा है। सो जब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज दोनों रिएजेंट हैं तो फर्स्ट स्टेप इज दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई विच इंग्रेडिएंट या विच रिएक्टेंट इज इन एक्सेस। ठीक है, और जो एक्सेस में होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। डेफिनेटली अगर एक एक्सेस में है तो दिस द सेकंड वन इज गोइंग टू बी द लिमिटिंग रिएजेंट। सो वंस वी हैव आइडेंटिफाइड द लिमिटिंग रिएजेंट देन वी विल बी प्रोसीडिंग आवर कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ the quantity of the limiting reagent. That can be your mass, that can be your moles, that can be your volume, that can be your moles in solution or whatever, and on the basis of that we will be finding out the values or whatever the quantities they are asking you to form the product. Is it clear? So this is how we'll be proceeding. Now the in this limiting reagent thing, the best thing, क्योंकि हमारे पास जो equations होती हैं, ठीक है, वो equations हमें molar ratio देती हैं। जैसे for example, if I write down the equation iron reacts with sulfur to form iron sulfide, and this is a balanced equation, तो ये हमें देती है molar ratio 1:1, right? तो हम क्या करते हैं, जो भी हमें quantities दी हुई हैं दोनों रिएजेंट्स की, अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें मास में दिया हुआ है या फिर इन्होंने हमें जो भी अगर कोई रिएक्शन है जहाँ पे गैसेस हैं, वी लेट्स से वी हैव नाइट्रोजन प्लस रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गिविंग यू 2NH3. नाउ दीज आर गैसेस, दे माइट गिव अस वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दे माइट गिव अस वॉल्यूम ऑफ दिस। तो इन दोनों में कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है मोलर रेशियो, ठीक है, इक्वेशन हमें बताती है मोलर रेशियो 1:1 है और ये मोलर रेशियो बता रहा है हमारे पास 1:3 है। तो मोलर रेशियो के बेसिस पर आप क्या करते हैं, क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम आई नीड टू कन्वर्ट इनटू मोल्स, ठीक है, दिस आई कन्वर्ट इनटू मोल्स. So when I convert these quantities into moles, then the comparison with the molar ratio I can make easily, and I can say, okay, fine, this is my limiting reagent, and now this is an excess.
So I'm going to ignore the excess and my calculation will further proceed on the basis of limiting reagent, whatever the volume, whether moles, whatever it is, I'll be proceeding my calculation with whatever the quantity is given to me. And hence you are able to find out about the product. Okay. Okay, whatever we have, I've explained to you. Now let's apply it in the question so the things become more clear to you. Now this is a question that the question says that I have 5 grams of iron and I have 5 grams of sulfur. So iron is basically 5 grams and I have 5 grams of sulfur. So these, they have given you the masses of, they have given you the mass of iron and they have given you the mass of sulfur are heated together to form iron sulfide. So iron sulfide is a product which is being formed. Now, first thing is that you need to find out which is my excess reagent. Okay. Now, what I'm going to do is that they have given me the masses. Now, I will be converting them into moles because here I have a molar ratio. I have a molar ratio of 1:1. My equation is balanced. This is my balanced equation, right? So I have already told you before that we will be working with the balanced equation. Aapki jab bhi, whenever you're doing mole relation related questions, so the first thing is that you need to have a correct equation and that should be balanced. So balanced equation we are having so that we get the molar ratio. So that means iron and sulfur, they are reacting in the ratio 1:1. Now the masses is given to us, that is 5 grams and 5 grams, and let's convert that into moles so that we can make a comparison on the basis of moles. So how are we going to convert the mass into moles? Again, the same formula. The formula is moles equal to mass over AR or over MR, right? Now we are going to take the AR in the case of iron sulfur because these are the elements. So when we convert their masses into moles, we'll be dividing them with the relative atomic mass. और जब आयरन सल्फाइड से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट निकालना होगा मास, तो I'll be multiplying it by MR. ठीक है? So let's convert these masses into the moles. So what I'll do here, I will divide 5 by 56, which is the relative atomic mass for iron, and I'll divide 5 by 32, which is the relative atomic mass of sulfur. So when I divide them, I am going to get the value that is 0.0893. These are the moles, okay, 893 moles. And here on dividing 5 by 32, I'm getting 0.56. What is my molar ratio? Let's get back to it. My molar ratio is 1:1. So looking at these two values, my ratio is 1:1. Looking at these two values, I can clearly see that 0.56 is my excess reagent, whereas my limiting reagent will be your amount of iron. This is my limiting reagent. So whatever I need to calculate, whatever is the demand of the question regarding product, so I will be ignoring my excess reagent, but I'll be taking the moles or mass of the limited reagent to find out whatever they're asking me to find about the product, right? So I'm able to, through this calculation, through these comparison on the basis of the molar ratio, I'm able to find out that my limiting reagent is actually my excess reagent is basically my sulfur. तो मैंने क्या किया, उसके मास को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया और सेकंड स्टेप पे मैंने मोलर रेशियो को अप्लाई करते हुए, ठीक है, मोलर रेशियो के बेसिस पर आई मेड made a decision that this is in excess and this is my limiting. Now moving on to the part 2. Now part 2 is asking what mass of iron sulfide will be produced. They're asking that what mass this was going to produce. So they're asking you the mass of iron sulfide. So what I'm going to do is, now I'm going to ignore the quantities given of sulfur. I'll be proceeding with the values of either the mass or the moles which are given of my limiting reagent iron. So now I can rearrange, I can have the equation where I take iron and how much iron sulfide is being formed. These are the parts. Sulfur I can ignore because that's an excess, and they're again reacting in the ratio of 1:1. Okay, this is my balanced equation का part. Now it says that चाहे आप इसके अंदर moles ले लीजिए या mass ले लीजिए. चलो let's say कि अगर मैं इसके अंदर ये moles लेती हूँ और यहाँ पर mass calculate करना है, तो how many moles? Basically it says that
1 mole is giving me how much? 1 mole is giving me the mass, because I need to find out the mass. So I'll convert this into MR. So the MR of iron sulfide is 88. So 1 mole is giving me 88 grams of iron sulfide. So these many moles, which is basically 0.893, which I'm getting when I divide 5 grams within AR. So these many moles will give me X. So I'll compute it, I'll calculate it. It's going to be 88 divided by 1 multiplied by 0.0893. So the mass which I'll be getting on calculation is going to be my 7.86 grams. So this is how, if I'm given the value for both the reactants, then what are the steps? What are the steps I've done here? The step number one, if the both the reagents, reagents or the reactants values are given to you, so we need to decide which is our limiting reagent or which is an excess. Okay, now once this decision has been made, then we'll be continuing our calculations by taking लिमिटिंग रिएजेंट अहेड। ठीक है, आप लिमिटिंग रिएजेंट के जो भी आपने मोल्स कैलकुलेट किए हैं, तो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी आपको क्वांटिटीज दी हैं, चाहे मास हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कॉन्सेंट्रेशन हो, हमें क्योंकि मोलर रेशियो के बेसिस पर उसको कंपेयर करके लिमिटिंग और एक्सेस निकालना है, तो इन क्वांटिटीज को हम मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमें अच्छे से पता है कि मोल्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कौन से डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं। तो आई राइट डाउन दोस फॉर्मूलाज हियर। मैं भी आपको एक ये फॉर्मूलाज लिख के दिखाती हूँ। अगर हमारे पास मोल्स सॉलिड में है, ठीक है, मोल्स अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज मास डिवाइडेड बाय AR और MR, डिपेंडिंग कि हमारे पास सब्सटेंस एलिमेंट है या सब्सटेंस कंपाउंड है। दैट्स अ फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अगर आपका मोल्स जो है आपको कैलकुलेट करने हैं गैसेस के, ठीक है, तो उसके कैलकुलेट करने के लिए व्हाट डू, वी हैव द वॉल्यूम और उसको डिवाइड कर देते हैं आप 24 DM क्यूब के साथ। ठीक है, तो आपके पास जो भी वॉल्यूम है उसको 24 DM क्यूब के साथ जब आप डिवाइड करेंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 24 DM क्यूब। ठीक है, जिस तरह से हमें पता है कि 1 मोल का जो एक ऊपर वाले का फैक्ट है, दैट इज 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस is equal to its AR or MR in grams। सही है, तो ये आपका फैक्ट नंबर 1 है रिलेटेड टू मोल्स। दिस इज योर फैक्ट नंबर 2 रिलेटेड टू द मोल्स। ठीक है, दीज आर द फैक्ट। कमिंग टू द थर्ड फॉर्मूला, जिसमें मोल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मास दिया हुआ है या वॉल्यूम, तो आपको मोल्स में कन्वर्ट करना है। और जब आपके पास दोनों रिएजेंट का मोल्स आ जाएंगे, तो फिर आप उनको कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, एंड यू कैन डिसाइड ऑन कि विच इज अ लिमिटिंग एंड विच इज एन एक्सेस। अगर आपके पास मोल्स इन सोल्यूशन है, इफ यू हैव अ मोल्स इन सोल्यूशन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला? The formula is basically concentration divided by 1000 multiply by volume। तो आपके पास मोल्स, अब आपके पास दोनों रिएजेंट A एंड रिएजेंट B के मोल्स में आपने कन्वर्ट कर लिया। इन मोल्स को कंपेयर करेंगे, यू विल बी कंपेयरिंग these moles on the basis of ratio, and you will get to know which is your limiting reagent or which is your excess। Ignoring the excess, the excess by ignoring the excess, your further calculation will be proceeded taking the limiting reagent, and hence you will be able to calculate whatever is the demand of the question related to the product. So that is basically the gist. Now let's do a few more questions. I'll be doing one ATP question which is based on the limiting reagent, and let's do a few more paper 2 questions. Now we have 2 questions here on the screen. Now I'm reading the question. The question says that what mass of copper is being produced. So they're asking what mass of copper is being produced. I'm comprehending the question, I'm writing it down
under the equation. Now first thing I need to check, is my equation balanced? Yes, my equation is balanced, and then I'll be reading the question and will be writing it down under the equation. Now after that, this I need to find out. Now what is being given to you, what mass of copper is being produced if 160 grams of copper oxide, if 160 grams of copper oxide and 14 grams of carbon monoxide reacts together. Now इन्होंने क्या किया, what they have given, I told you when we are going to apply the limiting reagent concept, when both the reagents quantities are given to you. So what we'll be doing in the step one, we have to find out which is a limiting and which is an excess. So how you will do that, we'll be converting them into moles. When we converting them the moles, then we can, on the basis of the molar ratio, we can make a comparison which is limiting and which is an excess. So what I'm going to do next, I'm going to convert into moles by dividing mass with MR for copper oxide. The MR for copper oxide is basically 80, and the MR for carbon monoxide is 28. So I'll divide this by 80 and I'll divide this by 28. So we will be getting the moles. Okay. Now here we will be getting the moles. Now in this scenario, when we compute, we will be getting the number of moles, that is basically that clearly says that we are getting 2 moles here and we're getting 0.5 moles here, right? Now equation says that the molar ratio, is basically 2:1. इक्वेशन के हिसाब से मोलर रेशियो जो है फ्रॉम इक्वेशन, मोलर रेशियो फ्रॉम इक्वेशन इज 2:1. तो अगर हम इसके 2 मोल्स लेते हैं, ये वाले जो यही मास लेते हैं, तो हमें 1 मोल चाहिए. दैट मीन्स हमें 28 ग्राम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए, जो कि नहीं है, हमारे पास 14 ग्राम्स है. और अगर हम 14 ग्राम्स ये लेते हैं या फिर हम 0.5 मोल्स ये लेते हैं, तो इसके 2 टाइम्स हमें चाहिए कॉपर ऑक्साइड. दैट मीन्स हमें 1 मोल चाहिए या फिर हमें 80 ग्राम्स चाहिए. तो ये चीज, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, so this is telling us that my limiting reagent which is limiting the reaction is basically my carbon monoxide. ठीक है, this is my limiting reagent and this is an excess. Why it is an excess? क्योंकि अगर मैं इसको 2 moles लेती हूँ, तो according on the basis of 2:1 का ratio, I am not getting 1 मोल नहीं है, मेरे पास 0.5 है. तो 2 मोल्स अगर मैं लूंगी तो मेरे पास 0.5 है, 1 मोल मैं कहाँ से लाऊंगी? तो ये मेरे पास एक्सेस है. और अगर मैं 0.5 लेती हूँ तो आई कैन इजिली हैव 1 मोल, द 1 मोल विल रिमेन एक्सेस. ठीक है, तो आई विल बी इग्नोरिंग कॉपर ऑक्साइड. मैं कॉपर ऑक्साइड की जो भी वैल्यूज हैं उनको इग्नोर करूंगी और अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनको लिमिटिंग रिएजेंट से लेकर आगे प्रोसीड करूंगी. चाहे मैं यहाँ पर मास को लेके प्रोसीड करूं, या मैं मोल्स को लेकर प्रोसीड करके अपना प्रोडक्ट के बारे में जो भी वॉट एवर दे आस्किंग आई कैन फाइंड आउट. सो let's see what mass of copper. So basically carbon monoxide और कॉपर के बीच में आई हैव टू मेक अ रिलेशन. तो कॉपर ऑक्साइड के इन्होंने हमने कैलकुलेट कर लिया, या तो मैं 0.5 मोल्स ले सकती हूँ या फिर आई कैन टेक 14 ग्राम्स. बोथ द थिंग्स आई कैन हैव, राइट. तो कॉपर ऑक्साइड का अगर लेट्स सपोज अगर मैं मोल्स लेती हूँ और मुझे ये इसका मास निकालना है, ठीक है, तो अगर 0.5 ओके. सो अगर मैं इसको एक स्टेप थोड़ा सा गैप बना के लिखती हूँ ताकि मैं इसको यूनिटरी स्टेप के फॉर्म्स में लिख सकूं. तो ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 0.5 मोल्स हैं तो मुझे कितना मास ऑफ कॉपर मिलेगा. तो आई नो फ्रॉम एन इक्वेशन, तो पहला स्टेप हमेशा हम लेते हैं इक्वेशन से वैल्यूज को डिराइव करते हैं. वी डिराइव द वैल्यूज from equation in the first step. ठीक है, the first step when we write down, we always derive the values from equation, and the second step we will be comprehending the question
एंड राइटिंग द वैल्यूज। तो हमेशा मैं, आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं इक्वेशन लिखती हूँ तो थोड़ी स्पेस छोड़ के नीचे कॉम्प्रिहेंड करती हूँ, ताकि मैं उसी हिसाब से वैल्यूज जो है वो इक्वेशन से डिराइव कर सकूँ। अब यहाँ पर मोल है और ये मेरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ये मोल्स है, तो मोल्स कितने हैं मेरे पास, आई हैव 1 मोल हियर, आई हैव 1 मोल हियर, राइट, क्योंकि इक्वेशन में देखो यहाँ पर 1 मोल है, राइट। तो मैं यहाँ लिखूंगी 1 मोल, आई एम डिराइविंग द वैल्यूज फ्रॉम द इक्वेशन। और ये चीज मैंने बिल्कुल क्लियरली वीडियो 1 में पार्ट 1 ऑफ मोल्स में एक्सप्लेन की है। सो 1 मोल इज बेसिकली गिविंग यू हाउ मच मास, क्योंकि यहाँ पर मास के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो AR ऑफ कॉपर इज बेसिकली 64, सो 1 मोल इज गिविंग यू 64, सो 0.5 मोल्स विल बी गिविंग यू X। सो X इज बेसिकली, X जब मैं कैलकुलेट करूंगी तो बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड, right, I'll be having the values like 64 divided by 1 multiply by 0.5. So my answer is going to be how much? It's going to be अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, तो ये रेशियो जो है, मैंने एक यहाँ पर चीज मिस आउट कर दी है। आई हैव 2 moles, 1 mole of copper oxide is giving 2 moles of copper, so 1 mole is giving 64 into 2, so 0.5 will give you 2 multiplies by 64 into 0.5. So my mass which I'll be getting of copper using 0.5 moles or using 14 grams of carbon monoxide, I'll be getting 64 grams of copper. Okay, so this is how we'll be doing. Now let's proceed further. Let's see the second scenario. In the second scenario, this is more or less the same scenario, but the only thing is the demand what I need to calculate related to the product is slightly, the question की जो demand है वो slightly different है. Let's see what volume, हमने already पिछले ये same scenario. Now what volume of carbon dioxide produced, what volume they're demanding कि इसकी कितनी volume होगी. So under the carbon dioxide I'm writing down how much DMQ, how much volume of carbon dioxide produced if we have 160 grams of copper oxide and if we have 14 grams of carbon monoxide. ठीक है, सेम सिनारियो है, सेम इक्वेशन है, सेम मासेस है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि कॉपर ऑक्साइड हमारे पास एक्सेस में और लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो कॉपर ऑक्साइड का पार्ट हम इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को ही कंसिडर करेंगे। तो अब 16 ग्राम्स हमें हमें कैसे पता चला था कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि हमने इसके अंदर मोलर रेशियो को, इसको मोल्स में कन्वर्ट करके इसको मोलर रेशियो में ले लिया था। तो ये 14 ग्राम्स कितने मोल्स बना रहा था, 14 ग्राम्स हमारे बना रहा था मोल्स 0.5 मोल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, जो हम स्पेस छोड़ के क्वेश्चन को यहाँ पर कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हमने इसको या तो आप 0.5 मोल्स ले लें या 14 ग्राम्स ले लें। तो लेट्स से अगर मैं मोल्स में इसको रहने दूं तो 0.5 मोल्स कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेगा। इससे ऊपर वाला जो ये स्टेप 2 है, स्टेप 1 जो है, वी विल हैव द वैल्यूज, रिलेटेड वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये मोल्स है, तो इसके मोल्स कितने हैं, आई हैव 1 मोल है। और यहाँ पर ये डीएम क्यूब है, तो ये वॉल्यूम कितनी होती है, और हमें पता है कि 1 मोल ऑलवेज ऑक्यूपाई 24 डीएम क्यूब। तो ये 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 24 डीएम क्यूब। सो 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग 1 मोल of carbon monoxide is producing 1 mole of carbon dioxide. So 0.5 moles will be producing xdm cube. Now write down 24 divided by 1 multiply by 0.5 will get the answer 12 dm cube. सही है। तो पहला हमने स्टेप किया कि जहां पर हमने लिमिटिंग रिएजेंट डिटरमिन किया, जो भी क्वांटिटीज थी उनको मोल्स में कंपेयर करके मोलर रेशियो चेक करा कि कौन सा एक्सेस हो सकता है, कौन सा लिमिटिंग हो सकता है। और उसके बाद जो मैंने आपको मोल्स पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया था, जब एक बार लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड हो जाए, तो जैसे मोल पार्ट 1 में हमने सारी कैलकुलेशंस करी थी, विल बी प्रोसीडिंग विद द सेम वे। तो इसके अंदर सिर्फ ये एक्स्ट्रा स्टेप है जहां पर आप रिएक्टेंट्स में से ये डिसाइड कर लेते हैं एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है। एक्सेस को इग्नोर करके लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पर हम आगे के प्रोडक्ट की बेसिस की कैलकुलेशंस रिपीट करते हैं। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आई विल बी मूविंग ऑन
All right. Now this is a question which is related to the ATP. ठीक है, ये ATP का question है based on the limiting reagent. Now I'm reading the question. It says that a student at 50.0 cm cube of इतने molarity, तो ये इन्होंने दी हुई है volume और ये दिया हुआ है इन्होंने concentration of silver nitrate. ठीक है, of silver nitrate, ये silver nitrate का दिया हुआ है AgNO3 का, सही है, to a beaker containing 40 cm cube, ये वॉल्यूम दी हुई है, and the concentration of sodium bromide. तो इन्होंने दोनों रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन भी दी हुई है और वॉल्यूम भी दी हुई है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और इसकी भी इन्होंने वॉल्यूम दी हुई है. दैट मीन्स दोनों रिएजेंट की वैल्यूज उन्होंने दी हुई है. और व्हाट आर दे आस्किंग, दे विल बी आस्किंग अस, आगे क्वेश्चन हम जब पढ़ेंगे, दे आर आस्किंग अस द मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई होता है जब दोनों रिएक्टेंट की वैल्यूज दी हुई होती हैं. तो उसमें हम पहला स्टेप क्या करते हैं, द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू डिसाइड कि विच इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. और वो हम कैसे करते हैं, जो भी क्वांटिटीज हमें दी हुई होती हैं उन क्वांटिटीज को, चाहे वो आपको मास दिया हुआ हो या आपको वॉल्यूम दी हुई हो या आपको वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन दी हुई हो, उन सबको हम क्या करते हैं, मोल्स में कैलकुलेट कर लेते हैं और उस मोल्स को मोलर रेशियो के साथ कंपेयर करके फ्रॉम द इक्वेशन वी गेट टू नो विच इज अ लिमिटिंग रिएजेंट. जब लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल जाता है, उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी हमसे डिमांड कर रहे हैं, वॉल्यूम, मास, मोल्स, वी कैन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एटीपी में आपको कलर्स पूछते हैं सिल्वर सॉल्ट के. ठीक है, तो लेट्स राइट इट डाउन. सिल्वर क्लोराइड इज बेसिकली व्हाइट इन कलर. सिल्वर क्लोराइड को याद रखिए, दिस इज व्हाइट इन कलर. ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड you'll call it ऑफ वाइट. ठीक है, ये ऑफ वाइट होता है. सिल्वर ब्रोमाइड will be ऑफ वाइट. ठीक है, there are certain color compounds which you need to know. और सिल्वर आयोडाइड will be yellow in color. सही है. और यहाँ पर ये देखिए कि ये प्रेसिपिटेट आ रहा है, सही. तो द प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज प्रोड्यूस, सो you'll write down it is going to be pale yellow. Pale yellow is also accepted, और इट्स ऑफ वाइट, बोथ आर एक्सेप्टेड. सही है. अच्छा, ये पार्ट तो हमने कर लिया, ये तो हमारा रटा रटाए ऑब्जर्वेशंस है. नाउ हाउ इज द प्रेसिपिटेट सेपरेटेड. नाउ दिस, when you talk about the precipitate is something which is insoluble. And how do you remove the insoluble? We remove the insoluble by the filtration. तो अभी तक हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आया पार्ट ए में. आगे प्रोसीड करते हैं, लेट्स मूव अहेड. अब आते हैं हम आगे. नाउ इट सेज दैट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसकी वॉल्यूम इतनी दी हुई है और जिसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी दी हुई है. नाउ व्हाट फॉर्मूला will use in order to calculate the moles? So that's C divided by 1000 multiply by volume. तो concentration कितनी है हमारे पास, concentration is 1 divided by 1000 multiplied by वॉल्यूम विच इज 50. सही है. तो पार्ट बी, पार्ट 1 की जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, दैट इज बेसिकली कमिंग, that is 0. I'm getting 0.5. So I'm getting 0.05 moles. Now let's do the same for the sodium bromide as well. तो sodium bromide के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा. ये आंसर आ रहा है 0.05 और ये हमने कैलकुलेट किया है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का. इसी तरह से हम सिल्वर सोडियम ब्रोमाइड का कैलकुलेट करेंगे, NaBr का. तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है इनकी, सोडियम ब्रोमाइड की, दैट्स 1.5 डिवाइडेड बाय 1000, right? Multiply by the volume, which is 40. When you'll compute this, we are getting the answer that's we are getting 0.06. ठीक है. तो ये जो है, अब यहाँ पर मोलर रेशियो देखो 1:1 का है, राइट. लेकिन सिल्वर नाइट्रेट हमारे इन कैलकुलेशंस के हिसाब से, वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, सिल्वर नाइट्रेट जो है वो है आपका 0.05 और सोडियम ब्रोमाइड जो है दैट इज 0.06. और मोलर रेशियो क्या बता रहा है, मोलर रेशियो बता रहा है 1:1 का रेशियो. तो अब इसमें से हम दोनों वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली वी आर एबल टू सी दैट दिस इज एन एक्सेस. ठीक है, ये जब एक्सेस है तो दूसरा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो एक्सेस की वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे और आगे जो भी हमें कैलकुलेशन प्रोसीड हम करेंगे दैट विल बी डूइंग on the basis of the limiting reagent. Let's see what they're asking us. Using your answer in B1 and B2 and the equation,
ठीक है, कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। एटीपी क्वेश्चन का बेस्ट पार्ट ये होता है, दे आर ऑल स्टेप बाय स्टेप गाइडेड, राइट। तो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट द मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। तो लिमिटिंग रिएजेंट को लेकर हम सिल्वर ब्रोमाइड का मास कैलकुलेट करेंगे। तो अगर ये आपका सारा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोड, silver nitrate, sodium bromide, sodium nitrate, silver bromide, they all are in the ratio 1:1. तो अगर 0.05 इसके मोल्स हैं तो इसके भी जो 0.05 मोल्स ही इसके फॉर्म होंगे या प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। बट एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है मास, तो मास के लिए हम क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला दैट्स मोल्स इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय एम आर, ठीक है। और एम आर हमने कैलकुलेट किया सिल्वर ब्रोमाइड का, तो एम आर इज कमिंग अराउंड 188। इट्स AgBr, AgBr के अंदर 108 प्लस 80 इज गोइंग टू बी 188। तो अब इन्होंने क्या किया, मोल्स को एम आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मोल्स कितने, 0.05, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने 188 के साथ, तो अब मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आ जाएगा। सो मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आई विल बी गेटिंग एज 9.3 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आपको दोनों की वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन दी थी, उनको हमने मोल्स में कन्वर्ट करके कंपेयर किया, एंड वी फाउंड आउट व्हिच इज एक्सेस। एक्सेस को इग्नोर करके लिमिटिंग रिएजेंट के मोल्स लेते हुए हमने सिल्वर ब्रोमाइड के मोल्स रेशियो बेसिस पे फाइंड आउट करे और उसको एमआर से मल्टीप्लाई करके वी गॉट द मास। नाउ लेट्स सी व्हाट्स देयर द डी पार्ट। In the D part, the student repeat the experiment, but this time the volume and concentration of silver nitrate and sodium bromide, we can see they are different. तो अब इन्होंने वॉल्यूम, अब अगर हम सिल्वर नाइट्रेट लें और यहाँ पर सोडियम ब्रोमाइड के हम दोबारा से मोल्स कैलकुलेट करेंगे, तो सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स क्या हो जाएंगे, 50 वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 1000, हमारे पास यहाँ मोल्स आ गए 0.05, ठीक है। और सोडियम ब्रोमाइड के जो होंगे वो क्या है, दैट 60 इज अ वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 0.5 डिवाइड बाय 1000, तो इसके मोल्स आ रहे हैं 0.03, ठीक है। अब इस सिनारियो में अगेन द रेशियो इज 1:1। अब इस सिनारियो में हमारे पास एक्सेस कौन सा हो गया, 0.05, तो इसकी वैल्यूज को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये एक्सेस है। अब हम सोडियम ब्रोमाइड की वैल्यू को लेते हुए हम अब आगे कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस द AgBr mass which they are asking us. Now calculate the mass of silver bromide using these value by finding the new limiting reagent. तो हमें पता है कि limiting reagent की जो मोल्स हैं वो 0.03 है, और हमारा मोलर रेशियो जो है सोडियम ब्रोमाइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का जो रेशियो है दैट्स कमिंग 1:1। तो अगर सोडियम ब्रोमाइड के 0.03 है तो AgBr के भी नंबर ऑफ मोल्स 0.03 होंगे। वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय एमआर। एमआर हमने कितना निकाला था, 188, तो 188 मल्टीप्लाई बाय 0.3, so we will be getting the mass that is basically your 5.64 grams. So this is a limiting reagent question in the ATP style. This is an ATP question. That's a repeat question. It has come approximately 3 to 4 times in the previous years. So you should be knowing how to attempt it. जब भी दोनों reagent के हैं तो हमारा पहला काम होता है कि हम limiting निकालें। Limiting निकालने के लिए हम उसको moles में convert करेंगे, तब molar ratio से compare करके we'll get to know कि which is the limiting. और limiting reagent हमने निकाल लिया, excess को ignore करके limiting reagent के base पे आप product की जो भी चीज़ निकलवा रहे हैं वो आप निकालेंगे। And that's all about limiting reagent.